live maybe obvious. Yeah, someone is asking question, na? Yeah, I was asking question. So, like you said we would be covering the sun planet today. So we would also be seeing in what Rashi sun is placed and according to what kind of disease it will give. Are we covering all the 12 Rashis also? Yes. Okay, great. So what we are doing today is we will discuss like what kind of health issues sun can give you. Okay, and suppose if sun is present in different signs and different houses, then what kind of result you can expect. Okay, these are general things we will discuss. Okay, for every sign. Okay, and then see there must be some common principles. Okay, for judging all planets. Okay, I can tell you the individual sun, moon, Jupiter for every planet. Okay, but you need some basic principles, na? So we will tell you the 10 principles today. Basically, there are 18 principles, but we are only discussing 10. First 10, easiest 10. Okay, great. Thank Okay. you. Then you can apply this 10 principle for every planet. Sure. Sure, sir. Thank you. Yeah. So may I please enable the recording. Yes, I started it. हाँ, शुरू हो गया. So हाँ, नीरज जी भी आज हमारे साथ हैं, तो ये जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे वो हिंदी में भी वो हम लोग एक्सप्लेन करेंगे फॉर हिंदी एंड इंग्लिश ऑडियंस बोथ. ओके, और इस जूम सेशन में ओनली 100 पार्टिसिपेंट्स हम अलाउ कर सकते हैं एंड रेस्ट ऑफ अदर दे कैन वॉच लाइव ऑन यूट्यूब. ओके, सो अभी 70 लोग और ऑलरेडी 70 participants are already in, so only 30 participants can enter and rest of other can watch live on YouTube. So any other questions? Sir, how often you will give this session, next sessions? Atharva ji, can you ask again? Your voice is actually breaking. Sir, I was asking how often will you keep these sessions? Every alternate week. Okay. Okay. Next week we are conducting H.N. Katwe series. Okay, Shri H.N. Katwe ji. So in that lecture we are covering Mars, Mangal Graha. Okay. So we will cover every aspect of this Mars planet, including Aries and Scorpio sign. Okay, secret behind this planet and how this planet operates in your chart and how can you predict. So we will discuss at least 30 snapshot predictive techniques. Okay, you can directly apply this predictive techniques in any chart. You can predict without any problem. Okay, so for next week we are scheduling this session. And of course that this H.N. Katwe series is not free. It's a paid session, so you have to register yourself. And it's a 2-day webinar, Saturday and Sunday. Okay, so you can also, and after next week we will do again this Ayur Jyotish session for next planet. Okay. Yeah. So any other questions, any doubts? सबको अपने नोट्स प्लीज आप लोग बनाते रहिएगा, ठीक है. हालांकि ये सेशन इट विल बी लाइव इन यूट्यूब, तो ये आपको यूट्यूब पे भी बाद में मिलेगा, बट स्टिल ट्राई टू मेक योर ओन नोट्स. यू कैन क्लिक द फोटोग्राफ ऑफ स्लाइड्स एनी टाइम, बिकॉज जब सेशन स्टार्ट होगा वी विल कीप यू ऑन म्यूट एवरी पार्टिसिपेंट, एंड जो भी आपकी क्वेरीज कुछ होगा यू कैन पुट योर क्वेरीज इन चैट सेक्शन, or else after every slide we will open chat window or we can unmute you so that you can ask your questions. नीरज जी ऐसा कर सकते हैं ना कि हर 2-3 स्लाइड्स के बाद हम उनको अनम्यूट कर देते हैं, दे कैन आस्क. हाँ, वो पूछ सकते हैं, और लास्ट में हम लाइव एग्जांपल भी 1-2 ले लेंगे. लाइव एग्जांपल्स भी 1-2 ले लेंगे. बट लाइव एग्जांपल्स में अब देखिए, क्योंकि वी आर डीलिंग विद सन प्लैनेट ओनली. ओके, सो लाइव एग्जांपल उनका मिले तो ज्यादा अच्छा है जिनका नहीं. लाइव एग्जांपल हम ऐसे लेंगे ना भैया कि जो हमने सूत्र पढ़ाए हैं उनको टेस्ट करना है इन लोगों को. अगर कहीं होगा इनके पास चार्ट तो ये चार्ट बताएंगे कि टेक्निक काम कर रही है.
ठीक है. And those students who are new, those who don't have any basic knowledge of Jyotish, they will find it a bit difficult. Okay. बट इसके लिए आपको बेसिक्स आने थोड़े ज़रूरी हैं. आपको हाउसेस के सिग्निफिकेशंस, प्लैनेट्स के सिग्निफिकेशंस एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए. बिकॉज हम जैसे इसमें एक हमारा प्रिंसिपल है कि हम लोग 22nd रेखना को भी हम लोग पढ़ेंगे, दृष्टांत 22वां दृष्टांत को भी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो उसको भी जानने के लिए एटलीस्ट यू हैव सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड दिस प्रिंसिपल. So, Neeraj ji, we are live on YouTube also, so keep monitoring those comments. Okay, भैया. आप देखते रहिएगा. So I think we can start now. Yes, yes. और किसी कुछ डाउट्स हैं तो अभी स्टार्टिंग में ही वो अपने डाउट्स क्लियर कर लें एक बार, बेसिक डाउट्स. क्योंकि मोस्टली लोगों को प्रॉब्लम ही होती है, कोई कहते हैं कि सेशन हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, तो वी आर डूइंग इन बोथ लैंग्वेज. ठीक है. इफ कोई अगर ऐसा है जिसको हिंदी में प्रॉब्लम है, सो आई एम एक्सप्लेनिंग इन इंग्लिश. हिंदी के लिए नीरज जी हैं यहाँ पर. सो यस. So the very basic question, what is medical astrology? As name suggests, this medical astrology contains two words. Okay, medical and astrology. Astrology we all know like Jyotish. Okay, and medical means it is dealing with the medicinal things. Okay, suppose if you want to diagnose any health issues in your body, or what kind of health issues you can face in nearby future. So all these things we can see in your horoscope through astrology. Through we have some set of principles, some set of rules. By using them, you can see any possible health issues in your horoscope. Okay, so this is a branch of astrology, is a branch of our Jyotish, through which we can diagnose any health issues and we can prescribe some remedies if possible. Because in our upcoming slides we will tell you like what kind of health issues for which you can use some remedies, and in some situation remedies will not work. Okay, so these kind of things we can see in our upcoming slides. So this medical astrology is a very interesting thing and very important branch in our astrology. Like yeah, so for medicine, like we all know, we must know the science of biology. Okay, the science of biology is must if you want to understand the medical thing. Likewise, they must have a good knowledge of astrology as well. Okay, if someone know the science of biology plus astrology, then they can do very well in this specific branch of Jyotish. Okay, so it is because astrology can render much help towards the diagnosis of ailments. नीरज जी, इसमें आप इसको एक्सप्लेन करना चाहें? नहीं भैया, आप कीजिए फिर मैं. हाँ जी, आप कर दीजिए या मैं कर दूं साथ साथ? हाँ, आप साथ साथ करके चलिए ना हिंदी में. बेसिकली क्या है कि मेडिसिन जो जिसको हम लोग कहते हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, वो दो वर्ड से मिलकर के बना है, मेडिकल एंड एस्ट्रोलॉजी. मेडिकल वर्ल्ड को जब एस्ट्रोलॉजी की नज़र से देखा जाता है तो हम इसको कहते हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी. और सबसे पहली बात कि इसको समझने के लिए हमें बायोलॉजी की जानकारी थोड़ी बहुत भी बहुत ज़रूरी है. डॉक्टर या डॉक्टरी से रिलेटेड या मेडिसिन से रिलेटेड थोड़ी सी भी जानकारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम बीमारी को नहीं समझते हैं तो हम ये नहीं समझ सकेंगे कि बीमारी ठीक कैसे होती है. और दूसरी बात कि जब तक हमें शरीर के अंगों की और प्लैनेट्स किस हिसाब से डिजीज देते हैं उसकी जानकारी नहीं होगी, तब तक भी हम नहीं समझ सकते कि ये कैसे काम कर रहा है. कंटिन्यू भैया. So before commencing treatment of any patient, one has to ensure his or her longevity. Okay,
So it means like this through this medical astrology, or see this is very basic requirement. So before judging any horoscope, before seeing any events like marriage or any property purchase events or any kind of events, most important thing is longevity. So first you have to check longevity. This is a more crucial point. So we will discuss about this longevity thing also in our upcoming lecture, not in this series. In our 10th or 11th webinar, we will cover this longevity and how you can calculate longevity of native and all these things we will discuss. But this is also very important thing for this medical astrology, because before seeing any chart, before predicting about uh, any health issues or anything, first you have to judge the longevity of native. It is very important. Okay, and in Jyotish, there are methods by which the longevity of nativity could be ascertained. There are hundreds of hints given in Ayurveda. There are many chapters in like Brihat Jatak and VPHs, and this chapter is specially dedicated for the estimation of longevity, like how to calculate the longevity of native. Okay, so you can read these classics, you will get better understanding, and we are also covering this specific chapter of longevity in our upcoming web series, this webinars. And yes, Neeraj ji. यस भैया, Hmm. सबसे पहले ट्रीटमेंट शुरू करने के पहले या मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अंदर जाने के भी पहले हम ये देखेंगे कि पेशेंट के अंदर लॉन्जिविटी है कि नहीं। ये लॉन्जिविटी हमें एस्ट्रोलॉजी के ही दृष्टिकोण से दिखाई देगी, और इसको जानने के लिए हमें क्लासिक्स पढ़ना होगा और समझना होगा कि आयु, जो भी व्यक्ति बीमार है, जो पेशेंट है, उसकी आयु किस ढंग से काम कर रही है, क्या वो अभी है या नहीं है। इस तरह के एग्जाम्पल हम आगे लेंगे जिसमें कि ये दिखाया जाएगा कि आयु के होने के कारण सूर्य से रिलेटेड जो भी बीमारियां हो रही थी, या सूर्य जिस भी प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था जिंदगी में, लॉन्जिविटी होने के कारण उससे ओवरकम कर लिया गया। लेकिन अगर लॉन्जिविटी नहीं है तो कुछ परिस्थितियों में बीमारियों से उबरना मुश्किल हो जाता है, और जो डिजीज होती है उस पर हम ओवरकम नहीं कर पाते, न दवाइयों के सहारे न और किसी एस्ट्रोलॉजिकल उपाय के सहारे। तो लॉन्जिविटी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। यस भैया। Like in Jyotish, in our astrology, we can tell in advance many years prior to the actual event, based on the directions of dashas, or there are some other systems of predicting the event in terms of years. Okay, so we can use this dasha system, this progression system, to tell in advance like what kind of health issues native can face. So when it can also give you guidance for the like remedial measures, like what kind of remedial measures you can opt to recover these health problems and all these things. And we will discuss about all these things in our upcoming slides. Yes, Neeraj ji. मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बीमारी के होने से पहले ही हम पता लगा सकते हैं कि जो नेटिव है वो बीमारी की ओर बढ़ रहा है। जो मेडिकल साइंस है उसकी एक प्रॉब्लम ये है कि जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो वो डायग्नोसिस करता है कि जो नेटिव है वो बीमार हो चुका है, उसके बाद उसका इलाज शुरू किया जाता है। लेकिन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी विद्या है जिसके द्वारा हम बीमार होने के पहले ही समझ सकते हैं कि किस प्लेनेट के द्वारा क्या प्रॉब्लम आ रही है, और उसके लिए उपाय करके उस चीज से ओवरकम कर सकते हैं। लाइक कुछ एग्जांपल्स हैं कि कभी कभी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी हमारे अंदर होने वाली प्रॉब्लम्स को समझ नहीं पाती। जैसे कि कोई नेटिव है और डॉक्टर के पास गया और वो चेकअप करवा रहा है, उसके सारे ऑर्गन्स सही हैं, डॉक्टर बोल रहा है सब सही है, सब कुछ सही काम कर रहा है, लेकिन 4 दिन के बाद उसको हार्ट अटैक आता है और वो मर जाता है। लेकिन जब डॉक्टर से पूछा जाता है तो वो ये कहता है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, उसके लक की बात है। तो कहीं ना कहीं प्लैनेट्स और हमारा लक, हमारी लॉन्जिविटी हम पर अधिकार रखते हैं, और उन्हीं के सहारे हम आगे बढ़ते हैं
उन्हीं के सहारे हमारा जीवन स्वस्थ होता है, हम सही ढंग से जीवन को जी पाते हैं। तो मेडिकल साइंस और एस्ट्रोलॉजी को मिलाकर के जब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी क्रिएट होती है तो इन दोनों के बीच एक नया समन्वय स्थापित होता है और आदमी आने वाली प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए पहले से तैयार रहता है। कुछ इसमें कुछ उपाय होते हैं जो कि मेडिकल से रिलेटेड होते हैं, कुछ उपाय होते हैं जो पहले से एस्ट्रोलॉजिकली होते हैं। यस भैया। Yeah, Neeraj ji, many people want to join this session, but they are facing the error. This meeting has been locked by host. Do you know how to remove this? भैया यू आर होस्ट नो। So what I can do for this? मैं इसके लिए क्या करूँ? अच्छा, हाँ ये तो लॉक्ड दिख रहा है। कहाँ लॉक दिख? ऊपर देखिए लॉक दिख रहा है, जूम मीटिंग लॉक्ड, ऊपर टाइटल बार में। एक सेकंड, लॉक। अब ये कैसे ठीक हो गई? एक मिनट में कोशिश करता हूँ भैया, Yes, आप yes. कंटिन्यू कीजिए, मैं कोशिश करूँ। हम्म. ओके, मैंने ठीक कर दिया, ठीक है। ठीक है, हम्म. कहाँ से लॉक हो गया था? वो पता नहीं, बाय डिफॉल्ट ऑप्शन था, वो ठीक कर दिया मैंने। अच्छा, यहाँ लॉक मीटिंग का है ना। Now it's okay. So, if you want to join, they can join now. Meeting is unlocked. Yes, people are coming. Okay. So from Now we will start. yeah, so from Yes, now onward, we will start from sun. See, from this slide onward, all slides are very important. So listen to these things very carefully. And if you want, you can take pics and snapshot. The disease which is connected with the sun. Okay, these are the disease you can see on your screen. Various nature, it means Pitta Prakriti. General health condition, heart disease, disease of organs, especially connected with the stomach. Okay, disease of bones, headache, hair fall, baldness, intolerance, fever, body pain, eye disease, okay, stomach disease, liver disease, gallbladder disease, some specific type of skin disease. See, skin disease is especially connected with the Mercury and with Ketu, but in Sun also we can see some certain type of skin disease, fear of weapons, fear of poisons, disease connected with the blood flow, leprosy, typhoid, high fever. See, high fever, any kind of fever that is ruled by sun. Okay, bleeding in the brain, burning sensation in the body. So these are the specific disease which is connected with the sun. Okay, so you can note down all these things. Yes, Neeraj ji. यस भैया, ये सारी जो भी अभी स्लाइड हम देख रहे हैं, इसमें वो डिजीज हैं जो कि सन के अधिकार में आती है, सूर्य के अधिकार में आती है, जिसमें कुछ डिजीज हैं बिलियस डिजीज, बिलियस नेचर यानी चिड़चिड़ा स्वभाव या द्विपक्षीय स्वभाव, और पित्त से रिलेटेड जो डिजीज है उसको हम सूर्य में लेंगे। उसके बाद जनरल हेल्थ कंडीशन जो सही हो या नहीं हो, ये भी सन के अधिकार में आती है। क्यों? क्योंकि सूर्य बाय नेचुरली आत्मा का कारक होता है। ये बॉडी की इम्यूनिटी को
दर्शाता है। तो अगर सूर्य खराब होगा तो इम्यूनिटी कम हो जाएगी और हम लोग जनरल हेल्थ इशू का सामना करने लगेंगे। भैया ये एनोटेशन लॉक कर दीजिए, कोई एनोटेट कर रहा है इसमें। उसके बाद सूर्य का अधिकार हर्ट पर होता है, इसलिए हर्ट से रिलेटेड डिजीज हो जाती है। अगर सूर्य पीड़ित हो या कुछ विशेष स्थानों में बैठा हो, कुछ विशेष ढंग से बैठा हो, तो पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी सूर्य से होती है। उसके बाद हड्डियों की प्रॉब्लम, ये भी सूर्य से होती है। हेडेक होता है क्योंकि सन का अधिकार सिर पे होता है। उसके बाद फीवर आ जाती है, बुखार, बॉडी पेन, स्वेलिंग्स का होना, आंखों की प्रॉब्लम होना, लीवर की डिजीज हो जाना, गोल ब्लैडर में प्रॉब्लम होना और फॉल्स होना। कभी कभी इंसान चक्कर आके गिरने लगता है सूर्य के कारण। कभी कभी इंसान को पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। ऐसी बीमारी होती है जो सर से कनेक्टेड होती है लेकिन पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, सूर्य के कारण होती है। ब्लड से रिलेटेड कनेक्टेड जो भी बीमारियां हैं वो भी सूर्य के अधिकार में आती है। उसके अलावा टाइफाइड होती है। उसके बाद ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाती है जिसको हम लोग ब्रेन हेमरेज कहते हैं। ये सब चीजें सूर्य के अधिकार में आती है। भैया पीपल आ रहे हैं, थोड़ा एडमिट करना पड़ेगा। Yes. I will. कंटिन्यू नेक्स्ट स्लाइड। So before continuing to next slide, I think we have to unmute all so that they can ask, especially connected with this slide only. Yes, I am unmuting. They can unmute now. May I please ask a question? Yeah, Vaniji. Sir, when you say hemorrhage, bleeding in the brain, hemorrhage only specifically to the brain or any part of the body is covered by sun? Especially with brain. Okay, right. Okay. Thanks, Ji. Because Thank you in so our much. next slide, you will also learn like for which body part sun is responsible. Okay. Sir, I want to ask a question. Yes. Sir, bones हम Saturn related कहते हैं, लेकिन यहाँ पे bones हमने सूर्य से related लिया Yeah, है. one you can also cover in sun also. Okay. क्योंकि लीवर भी जुपिटर से रिलेट करता है, लेकिन लीवर भी यहाँ पे हमने सूर्य से ही यहाँ पे लिया है. Yes, यहाँ सूर्य को भी लेंगे. So बेसिक सूर्य रहेगा, मतलब मेन सूर्य रहेगा और फिर हम चेंज करते जाएंगे, मतलब जुपिटर को भी चेक करना है सूर्य के साथ. Mainly that is connected only with Jupiter. Vinayak sir. Yeah. Vinayak sir, my mother had brain hemorrhage and she had very badly afflicted sun. I am confirming. My mother had brain hemorrhage, had badly afflicted sun. Confirming. Thank you. So Vani ji, I think आपको you have got your answer, no? Yes, I have. In fact, my mother also passed away due to brain hemorrhage, but I don't have her horoscope, unfortunately. I joined after her demise. Yes. So, thank you so much, Dr. सर बोन फ्रैक्चर्स जो होते हैं वो भी सन के अंडर आते हैं? या थर्मू जी, सर बोन फ्रैक्चर्स आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है. बोन फ्रैक्चर्स, यस सर, बोन फ्रैक्चर्स आते हैं. और अनुप्रिया जी, आपका जो क्वेश्चन था शनि और सन से रिलेटेड, जब शनि का प्रॉब्लम होता है तो आप ध्यान देंगे कि बैक पेन होता है या फिर घुटनों या पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है. शनि जो हड्डियों की प्रॉब्लम करता है वो बैक पेन करता है और घुटनों और पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है. लेकिन जब सन करेगा तो बॉडी की किसी भी हड्डी में प्रॉब्लम आ सकती है. ठीक है, यू गॉट इट? Yes, got it, sir. Thank you, sir. One second, can I ask you a question? 1 minute, ma'am. Hello? 1 minute. Yeah. Hello? 1 minute, ma'am. 1 minute. Listen you. अनुप्रिया मैम, मैं और क्लियर करना चाहता हूँ जुपिटर से रिलेटेड, और जब आप बात कर रही थी सन से रिलेटेड पेट की बीमारियां, तो इसमें समझने वाली बात यह है कि जब जुपिटर से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो लीवर से रिलेटेड ही स्पेशली प्रॉब्लम होगी. वो ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम है. लेकिन जब सन प्रॉब्लम करेगा तो पित्त के कारण पेट में प्रॉब्लम करेगा. कारण बदल जाते हैं, ध्यान रखना है आपको. क्योंकि सर पित्त क्या होता है? Correct. ठीक है ना? Okay, sir. Thank Now you. clear? Thank you. Yes, clear it. Very clear. Thank you. Hello. Can I? mentioned like a journal Yes, health ma'am, yes. issues also.
My question is like general health issues could be many types and could be represented by many planets, but is it like common we are taking sun, or we have to see what features and or what problems and what type of that, because it was mentioned as a general health issues. So Yes, ma'am. what's the specific meaning of general? देखिए बात, Yeah, thank you, sir. Yes. बात ये है मैम, See, the fear of weapon is basically a right? Who is this? Radhaji, can you repeat your question once again? No, I said fear of weapons and fear of poison. Poison gets into Rahu or when Mars in the Aslesha Nakshatra. Yes. Fear of weapon for sun, actually, I thought it is weapon goes for Mars Karak, right? Sharp Weapon is connected with Mars, but for now, just consider it as a sun also. Okay. Oh, okay. So when we cover Mars, then I will explain you like what is the difference between these two, Sun and Mars. Okay, but for now, whatever I mentioned. Yes, but the weapons also. Yes. So fear is Ketuna. See, we are discussing about the disease. Okay, so when we say sun, so suppose if you're facing a disease or any accidents or any kind of wounds, that is connected with the sun only. Okay, the brain and other thing. Yes, yes. So when we say the Mars is a very general thing about these weapons and all. Correct. Yeah, but here we are discussing only about the disease, accidents, and all these things. Okay, sun can also show these things. Okay, thank you. Okay, so don't worry about this. So when we discuss Mars, then you will get a clear understanding what is the difference between sun and Mars when we say weapon. Yeah, I want to ask a question. Hello. Yes, Shipraji. Can you hear me? Yes, okay. I can hear you. Yeah, I have Leo Lagna, and there are 4 planets in Leo Lagna: Saturn, Mars, Jupiter, and and Rahu. So I have severe disease of stomach, and I'm not able to find the cause of that. It's been 11-12 years, so doctors are not able to find, and I am having so much suffering because of that. So is it because of the Leo Lagna or something else? Yes, see, Leo is also responsible. Okay, Leo is also responsible. You have to see 5th house also. Yeah. Okay, Sun, and I think your Rahu is with Lagna, na? Rahu, पति और मंगल चारों लग्न में बैठे हुए हैं लियो लग्न. Yeah, so these all are responsible, including especially your Leo sign, and you have to consider your 5th house also. Can I ask a question, please? Yes, Janaki. Yeah, see, I have the same issue like what she said just now. I have got terrible acid reflux. Acidity भी नहीं बोल सकते हैं, and terrible headaches. And रात को सोती हूँ 3 बजे मुझे नींद में से जगा देगा. पूरा acid reflux. Yes, vomiting होती है. I used to be admitted every 2 months. अभी क्या है, एंजाइटी है बोल के वो लोग अभी मेरे को एंटी एंजाइटी के मेडिसिन देते हैं. उसमें काफी फर्क है, बट ये हेडेक जाता नहीं है. एंड दिस इज ड्यू टू द बाइल एंड द एसिडिटी व्हिच इज गोइंग अप माय हेड. माय सन इज इन द फर्स्ट हाउस, दैट इज माय लग्न इज मकर. तो सन इज इन द फर्स्ट हाउस. मेरा राहु 10th हाउस में है, बट तुला में है. गुरु और राहु साथ में है. मैम आपके बाल झड़ रहे हैं? मेरे तो बहुत झड़ रहे हैं. मेरे भी बहुत बाल झड़ रहे हैं और ग्रे भी हो गए हैं काफी. तो मैम आगे की स्लाइड पर ध्यान दीजिए. आगे की स्लाइड पर ध्यान दीजिए आप लोगों को. हेलो, मेरा ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है. ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है उसके वजह से. हेलो, आज आ रही है जी. मैं कहना चाहती हूँ कि मेरा 1 by 1 प्लीज. हेलो वरुण जी, पहले इनको खत्म कर लेने देते हैं, फिर आपके पास आते हैं. ये सिमिलर प्रॉब्लम है मैडम जो बोल रही है, सेम लाइक दैट. बाल भी झड़ रहे हैं. बाल तो खैर बहुत ही कम हो गए हैं, ग्रे भी हो गए हैं. और 12-13 साल से मैं मेडिसिन ले रही हूँ, लेकिन पता नहीं किस चीज की ले रही हूँ. मेरे तो 20 साल हो गए. मतलब ऐसे उल्टी हो जाती है. कुछ भी नहीं डाइजेस्ट होता है मेरे को. कितना सब पत्री दिखा लिया, सब कुछ कर लिया, बट नोबडी एबल टू फाइंड द कॉज. एंड देयर इज नो नथिंग मेडिकली. वो बोलते हैं कि कुछ नहीं है, आपको स्ट्रेस है.
कुछ नहीं है, मेरे सारे टेस्ट हो गए, 3 बार एंडोस्कोपी हो गई। देखिए स्ट्रेस तो सही है, ठीक है, और भी काफी चीजें हैं जो अभी आप जब नेक्स्ट स्लाइड आप देखोगे ना, तो यू विल गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। अभी तो अपने खाली मेरा मकर राशि में है, लग्न इज मकर एंड शुक्र और सूर्य साथ में है। मैम जब लास्ट छोटे से रिक्वेस्ट करनी थी। Yeah, Janki ji, don't worry. We will take your chart at the end of this session. Okay. Thank you. For now,